Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Electrical Engineering. I'm teaching you subject numerical methods and probability statistics. Today's topic numerical integration. Numerical integration are three types. First one is trapezoidal, Simpson 1/3, and Simpson 3/8 rule. Why we are using numerical method? We discussed that on why we are using numerical method and type of numerical methods uh, means which top methods we are applied. That first one is trapezoidal, then Simpson rule and Simpson two types. First one is uh, first one is Simpson 1/3 and another one is Simpson 3/8. Numerical methods. When we are not find integration by analytic method, then we find integration. Then we evaluate integration. Then we evaluate integration by numerical method. Why we apply numerical methods? When we are not find integration of any function by analytic method, then we evaluate that integral by numerical method. Numerical methods are first type, that is trapezoidal rule. In trapezoidal rule, if I'm having a function, there are point P and Q. There are 2 points P and Q. This one is a function. We draw a chord that is that one point is P and one other point is Q. If I integrate this function a to b f of x dx, then equals to b minus a by 2 f of a plus f of b. This method is called trapezoidal rule. This is here only one interval. Understood है? इसमें ब्रेक नहीं होगा, एक ही इंटरवल होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. Another method is composite formula of trapezoidal rule. What is the composite formula? If I'm integrate a to b f of x dx, we divide ab into n equal parts. Apply trapezoidal rule to evaluate integral. Then h equals to b minus a upon n. If anybody is saying it divide ab interval divide in 2 parts, 3 parts, 4 parts, etc., then this integral is equals to a equal to तो then h equals to दिस इज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, तो h इक्वल टू अगर मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना तो b माइनस a बाई 2, अगर कहा n पॉइंट्स में डिवाइड करना तो b माइनस a अपॉन n. a इक्वल टू x नॉट मींस इनिशियल पॉइंट x नॉट लेंगे और x नॉट की वैल्यू क्या होगी a, x1 की वैल्यू क्या होगी x नॉट प्लस h, x2 x नॉट प्लस 2h, xn इक्वल टू x नॉट प्लस nh इक्वल्स टू b. a से b f of x dx, तो x नॉट टू xn f of x dx, x नॉट टू x1 f of x dx plus f of x1 to x2 f of x dx. Understood? X to n minus 1 to xn f of x dx. So a to b f of x dx equals to h by 2 f of x naught plus first point means initial point, initial f of x naught plus last point f of xn plus 2 into remaining terms. Means आपको इसको याद करने का फॉर्म मेथड क्या है? फर्स्ट पॉइंट f of x naught, last point f of xn plus 2 into remaining points. Understood? If I am divide this whole this interval in 3 parts, तो पहला क्या होगा f of x naught, then f of x4 जिसको हम f of b कहेंगे प्लस सॉरी f of x3 बोल देंगे, x naught x1 x2 x3, तो 4 पॉइंट्स हो जाएगा f of x3 remaining 2 into f of x1 f of x2. Understood? This formula is called trapezoidal rule. What is called this one? It's called trapezoidal rule. Understood? h by 2 into first term plus last term plus 2 into remaining terms is of order 1. Understood? Then evaluate the following integral. Suppose that, okay, just the thing, why we are using numerical methods. In numerical methods, first thing, when we are not able to find integration of function by analytic method, then we are using a numerical method. Sometimes if you are having a discrete data, then you have to find integration of that data. Means
अगर आपके पास अब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, सपोज दैट इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट होता है दैट डी आई मींस डिफरेंशिएशन ऑफ, आई थिंक दैट इज आई फॉर करंट और आई फॉर या डी आई और डीवी मान लो, डीवी इक्वल्स टू सम इक्वेशन मींस डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज में कोई इक्वेशन गिवन है, बट आपके पास जब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट तब आप क्या करोगे, जब करंट बढ़ाओगे रेजिस्टेंस और करंट पे कुछ रेजिस्टेंस करंट बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस को घटाओगे या बढ़ाओगे, कुछ चेंजेस करोगे रेजिस्टेंस पे, देन यू हैव फाउंड चेंजेस इन करंट आल्सो, वोल्टेज आल्सो, अंडरस्टूड है। अगर आपको उस वोल्टेज में कोई चेंज आ रहा है बट यू आर हैविंग अ डिफरेंशिएशन वैल्यू, तो आप क्या करोगे, अगर v निकालना है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, दैट मींस जो भी चीजें हैं, अगर आपको मींस कि अगर डिस्क्रीट डेटा है तो उसका तो इंटीग्रेशन बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है, देन यू आर देन यू कैन अप्लाई न्यूमेरिकल मेथड्स, अंडरस्टूड है। व्हाई वी आर अप्लाइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्लाई, क्योंकि समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो रहा, कोई ऐसा फंक्शन है कि जो इंटीग्रेट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, उस टाइप में भी करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि व्हेन फंक्शन इज डिस्क्रीट केस, अभी हम एक आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर डिस्क्रीट गिवन है तब इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, तब भी हम ये यूज करते हैं, अंडरस्टूड है। नाउ फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूट डिस्कस्ड, ओके, नाउ दिस इज योर फार्मूला, this is of order 1 in computational examination. They ask what is the order of trapezoidal root, that is order of 1. Evaluate the following integral using trapezoidal rule if n is equals to 2 and n equals to 4 points के लिए, understood है, means n equal to 2 interval 2 के लिए और n equal to 4 के लिए, if you are having a question 0 to 1 dx upon 3 plus 2x, understood, solution, we have a equals to 0, अरे a to b f of x dx होता है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो f of x equals to 1 upon 3 plus 2x, then for n equal to 2 we get h equal to half because b minus a by 2, अंडरस्टूड है, तो b की वैल्यू कितनी है 1 minus 0 upon 2, that is 1 by 2, x not equals to 0, x1 equals to half and x2 equals to 1.0, तो that is इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी h by 2 f of 0 plus 2 f of half plus f of 1 means a की वैल्यू क्या होगी 0, तो x नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू हाफ एंड x2 की वैल्यू 1, तो x f of 0 if I put f of x equal to 1 upon 3 plus 2x, x की वैल्यू 0 पुट करें, then आंसर क्या आएगा f of 0 1 by 3, if I saying f of 1 by 2, तो 1 3 plus 2 into 1 by 2, तो 2 cancel out, that is 3 plus 1, that is 1 by 4, then 2 into 1 by 4 plus f of 1, so 1 upon 3 plus 2, that is 5, 1 upon 5, then evaluate this one, simplify this one, then 2 into 1 by 4, that is 1 by 2, so 1 by 3, 1 by 2 plus 1 by 5, answer will be 0.25833. For n equals to 4, if you want to find value of a to b, f a 0 to 1, f of x dx at n equals to 4, then we get h equals to, because h equals to b minus a by n, तो n की वैल्यू 4 है, तो 1 minus 0 upon 4, that is value equal to 1 by 4. Now x not equals to 0, x1 equals to x naught plus h, तो 0 plus h, that is 1 by 4, x2 equals to x2 x naught plus 2h, that is 1 by 2, x3 equals to x naught plus 3h, 3 by 4, x4 is equals to x naught plus 4h, 1, I equals to h by 2 f of 0 plus 2 into f of 1 by 4 plus f of 1 by 2 plus f of 3 by 4 plus means first term plus f of 1 last term plus 2 into remaining 1, that means x1 x2 x3, understood, okay, f of 1 0 की वैल्यू 1 by 3, f of 1 की वैल्यू 1 by 5, 2 into 1 by 4, that is 1 upon 3 plus 2 into 1 by 4, that is the answer will be 2 by 7, 1 by 4, 2 by 8, and simplifying this one, then answer will be 0.25615. This is your answer for
this is your answer of 0 to 1 f of x dx in n equals to 4 point. Understood? Means 4 intervals के लिए. Now second question, if a की value 0, b की value 2, f of x equal to 1 upon x square plus 2x plus 10, then integration क्या होगा आपका 0 to 2 f 1 upon x square plus 2x plus 10 into dx. Now suppose that for n equals to 2, then we get h equals to क्या होता है b minus a by 2. What is the b की value क्या है? b की value 2 minus 0 upon 2, then answer will be 1. तो x naught की value क्या हो जाएगी? 0. a होता है, x1 क्या हो जाएगा? b minus a by 2, that is 1. x2 क्या हो जाएगा? 2. तो I equal to h by 2 f of 0 plus 2 f of 1 plus f of 2. Understood है? Okay. तो 1 by 2, तो f of 0, that means 0 जब put करेंगे तो क्या आएगा? 1 by 10, तो आंसर will be 0.1 plus f of 1 we solve this one, put the value, then 0.15458. Now compare with the exact solution. Then exact solution is 1 by 3 pi by 4 minus tan inverse 1 by 3. That value will be 0.15455. Now another method is Simpson rule. Simpson rule, let interval 0 to b divides into two parts. If interval is divided in two parts, but in trapezoidal rule, whole interval I have taken, but composite rule में हमने कहा interval is divided into n parts. Understood? अगर interval two parts में divided है, that is called Simpson rule. Simpson one third. Understood? Then h equals to b minus a by 2. A to b, f of x dx equals to h by 3 f naught plus 4f1 plus f2. So x naught equals to a, x1 equals to a plus b by 2, x2 equals to b. Now composite rule means composite rule, a to b divides into n parts. Suppose means आपको always remember that any interval, if you are if anybody is saying that in this formula you will apply Simpson one third rule, then that interval divided into n equal parts, then we have applied Simpson one third rule. Otherwise, because it's a must condition, it's a condition to apply Simpson one third, means AB interval को कितने parts में divide होना चाहिए? 2n. That means 2, 4, 6, 8, whatever will be, but multiple of 2. And a equal to x naught, x1 equal to x naught plus h, x2 equal to x naught plus 2h, and x2n equal to x naught plus 2, and h equals to b. A to b f of x dx equal to h by 3. Understood? H by 3 f naught plus 4 into odd terms plus 2 into even terms. Understood? Okay. Suppose आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, रिमेंबर करने के लिए a to b f of x dx, आप इसको लिखो h by 3 because some one third, that means h by 3. अगर one third की बात करेंगे तो one third आ गया, h by 3. f naught first term plus last term. Simple. First term plus last term. Simple है. Next, 4 into odd terms. That means x1, x2. Sorry, 4 into odd terms. That is x1, x3, x5, x7, etc. 2 into even term. x2, x4, x6, etc. Understood? Now, evaluate the following integral using Simpson rule with n equals to 2 and 4. Compare with exact solution. If I'm saying 0 to 1 dx upon 3 plus 2x, then 0 to 2 dx upon x square plus 2x plus 10. We have a equals to 0, b equals to 1, n equals to 2, and n equals to 1. Suppose that if anybody is saying n equals to 2, that means that interval divided into 2n parts. Then 2 parts, that means capital N is equals to 1. Okay, now we have a equals to 0, b equals to 1, and capital N equals to 1. So f of x equals to 1 upon 3 plus 2x.
h equals to b minus a by 2, b equals to 1 minus 0 upon 2, that is 1 by 2. Now x not equals to 0 and x1 equals to half, x2 equals to 1. X not equals to 0, x1 equals to half, x2 equals to 1. I, that is the integral, I equal to h by 3. Understood? H by 3, f of 0 plus 4, f of half plus f of 1. Then f of 0 is equals to, that is 1 by 3 plus 4 into f of 1 by 2 is equals to 1 by 4 plus f of 1 is equals to 1 by 5. 1 by 3 plus 1 plus 1 by 5. Then answer will be 0.5556. Understood? This is the case of Simpson 1/3. Now another formula, another question, another example. For n equals to 4, I have to find for n equals to 4, the n equals to capital N equals to 2. Then we get h equal to b minus a by 2. Sorry, b minus a by 4. तो b की वैल्यू कितनी है? That is 2. Sorry, b की वैल्यू 1 minus 0. Understood? 1 minus 0 by 4. That means, sorry, 1 minus 0 by 4. That means 1 by 4. x0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 1 by 4 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 1 by 2. तो x3 क्या हो जाएगा? बिकॉज x0 इक्वल टू तो xa होता है. अंडरस्टूड? तो a की वैल्यू 0, x1 इक्वल टू x0 प्लस h और h की वैल्यू क्या? 0 प्लस h, h इक्वल टू 1 by 4. तो x1 इक्वल टू 1 by 4, x2 इक्वल टू x0 प्लस 2h. तो 0 प्लस 2 इंटू 1 by 4, that is 1 by 2. x3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू h, that is 3 by 4. x4 इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू h. तो I इक्वल टू इंटेग्रल h by 3, h by 3 f of 0 plus first term is f of x0, last term is f of x2n, that means x4. अंडरस्टूड है? अगर ये x4 है, ये x0 है, then 4 into odd terms and 2 into even terms. तो 4 into odd terms, that is 4 f of x1 plus f of x3 plus 2 into f of x2. अंडरस्टूड है? नाउ पुट द वैल्यू. तो x0 की वैल्यू क्या है? 0. तो सो f of 0, अगर हमने 1/3 plus 2x में x की वैल्यू 0 पुट करी, आप देखो x की वैल्यू 0 पुट कर तो क्या आएगा? 1 by 3. Now put the answer 1 by 3. 4 f of 1 by 4, so 1/3 plus 2 into 1 by 4, that is 1 by 2. So 7 2 by 7, 3 by 4 2 by 9. f of 1 by 2, answer will be 1 by 4. So 2 to 1 by 4 cancel हो जाएगा, plus 1 by 5. Then answer will be 0.25542. The exact solution, what is the exact solution? This is 0 to 1 dx upon 3 plus 2x. तो 1 by 2 taken common, तो 3 by 2 plus x. आप इसको ऐसे ले लो, कॉमन मत लो. ओके, अंडरस्टूड? आप सिंपली क्या करो, आप 3 plus 2x को t मान, इसका इंटीग्रेशन करना है. 3 plus 2x को t लोगे तो क्या होगा? dx अपॉन 2x, dx इक्वल टू dt. तो dx इक्वल टू dt by 2. तो 1 by 2 ln 3 plus 2x 0 to 1. अंडरस्टूड है? तो 1 by 2 एंड वी पुट द वैल्यू. तो 1 पुट करेंगे, 3 plus 2 that is 5, ln 5 minus ln 3 that is ln 5 by 3 into 0.5. Then answer will be 0.25541. Now next question. If you are having f of x equals to 1 upon x square plus 2x plus 10, a equals to 0, b equals to 2. For n equals to 2, that means n equals to 2 के लिए वैल्यू निकालेंगे. Then we get h equals to b minus a, that is 2 minus 0 upon 2, that is 2 upon 2, that is 1. So h equals to 1, x0 equals to 0, x1 equals to x0 plus h, and h equals to 1, then x1 equals to 1, x2 equal to x0 plus 2h, then x2 equals to 2, then integral value equals to h by 3 f of 0 f4 into f of 1 plus f of 2. The f of 0, that is, if I put the value 0 of x, the 0 plus 2 into 0 it plus 10, that is 1 by 10, plus 4 into f of 1, 1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 plus 2 plus 10, that is 13, plus f of 2, that is 1 by 18, then answer will be 0.15442. For n equals to 4,
n equals to 4, n equal to 2, we get h equals to half, x naught equals to 0, x1 equals to half, x2 equal to 1, x3 equal to 3 by 2. Understood? x2 4 equal to 2. Now put the value and you will get the answer 0.155454. Please आप इसको अपने पहले एक बार ट्राई कर लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आता है सिम्पसन 1/3. एक क्वेश्चन 100% आएगा 15 मार्क्स में. दो क्वेश्चन होंगे आई थिंक ट्रेपेजॉइडल का, या तो सिम्पसन 1/3 या तो सिम्पसन 3/8. In next class we have discussed that is Simpson 3/8. तो सिंपली उसमें कुछ नहीं करना, 3h/8 हो जाता है और थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंस होता है और उसमें कुछ नहीं करना. सिंपल यही मेथड है. नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मींस अगर आपके पास एक डेटा गिवन है, जैसे x गिवन है, f of x गिवन है. अगर x की वैल्यू x नॉट मान लो 1 है तो f of x नॉट क्या है 1, f of x1 2 तो 332, 2.5 then 97.625. मींस आप कितने पॉइंट्स है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर 5. मींस आपको 2n पॉइंट्स तो है नहीं. Then you are not applying Simpson 1/3 rule. Understood? Then you can apply here only the trapezoidal rule. तो आप h की वैल्यू क्या निकालोगे 1/5. Sorry, h equal to b minus a 5 minus 1 4 हो जाएगा. How many points are there? 1 2 3 4 5 6 7. तो 4/7 is your h की वैल्यू हो जाएगी. आप उस पर वैल्यू पुट कर देना, आपका ये आंसर ट्रेपेजॉइडल रूल से होगा. सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 0 to π/2 e की पावर -x cos x dx. सॉल्व इट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल. देन आपको अगर ये नहीं गिवन है n की वैल्यू तो आपको कौन सा निकालना है b minus a/2 f of a plus f of b. सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है. अगर आपको ये n की वैल्यू गिवन नहीं है then you apply only the simple one. अगर आपको n की वैल्यू गिवन है then you apply the composite form. Understood? Okay. In next class, one topic you're remaining, that is kurtosis, and another one is I will discuss Simpson 3/8 rule. Okay. Okay. Thank you so much everyone, and please remind that कि आप कैलकुलेटर ले लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उससे प्रैक्टिस कर लो. बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर की जरूरत जरूर होगी. विदाउट कैलकुलेटर आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर नहीं हो सकता. सो ओके, थैंक यू सो मच.